Assalamu alaikum, class 10th. This is the time for another video with chapter number 5, and chapter number 5 is about a visit. Visit माने सैर या कोई दौरा. हम विजिट करने जा रहे हैं इस चैप्टर के थ्रू एक मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म की, और इस चैप्टर में जो हमारा पर्पस है इस चैप्टर की स्टडी करने का वो भी यही है कि हम ये देखें कि किस तरह मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म्स न सिर्फ बेहतर हैं बल्कि आज हमारे वक्त की ज़रूरत भी है. एज आर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमें फूड सिक्योरिटी के जैसे मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं. तो इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि किस तरह से मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म्स हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं. आइए देखते हैं, पेज नंबर 21 पे देखिए. द चैप्टर इज अबाउट अ विजिट. Mr. Ahmed's class had been planning a picnic for some time. अहमद साहब की जमात कुछ अरसे से एक पिकनिक की मंसूबाबंदी करती आ रही थी. The headmaster had allowed them a day's outing. हेडमास्टर साहब ने उनको एक दिन की सैर तफरी की इजाज़त दे दी थी. And they were to go, और उनको जाना था by the school bus, स्कूल बस के जरिए. They were naturally very excited. जाहिर है, कुदरती बात है कि वो बहुत पुरजोश थे, बहुत एक्साइटेड थे. मिस्टर अहमद अरेंज द विजिट टू अ फार्म. अहमद साहब ने एक खेत पर, एक ज़मीनों पर उनकी इस विजिट का, इस दौरे का इंतज़ाम किया था विद मिस्टर हसन साहब के साथ. द मैनेजर ऑफ द मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म, जो कि मैनेजर साहब थे उस मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म. मॉडल के मायने होते हैं नमूना, मिसाली. मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म के मैनेजर थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने इस विजिट को प्लान किया. इट वॉज अ प्लेजेंट डे इन अप्रैल. ये अप्रैल का एक खुशगवार दिन था. व्हेन मिस्टर अहमद एंड हिज क्लास, जब मिस्टर अहमद और उनकी जमात या उनके तलबा रीच्ड द मॉडल फार्म पर पहुंचे. मिस्टर हसन रिसीव्ड देम एट द गेट. हसन साहब ने उनका इस्तकबाल किया दरवाजे पर. एंड शोड देम अराउंड, और उनको चारों तरफ घुमाया, दिखाया, फिराया. एंड शोड देम अराउंड. द बॉयज हैड नो आइडिया. लड़कों को कोई ख्याल न था, कोई आइडिया न था दैट एन एग्रीकल्चरल फार्म के एक ज़रई खेत कुड बी सो लार्ज, इतना बड़ा हो सकता था, एंड इंटरेस्टिंग, और इतना दिलचस्प हो सकता था. तो बच्चे क्लास के जो गए थे उनके साथ विजिट पे, उनको कोई आइडिया ना था. दे हैड नो आइडिया दैट एन एग्रीकल्चरल फार्म कुड बी सो लार्ज एंड इंटरेस्टिंग. इट वाज द व्हीट हार्वेस्टिंग सीजन. ये गंदम की कटाई का मौसम था. ये गंदम की कटाई का मौसम था. द पार्टी सॉ ह्यूज मशीन. उस पार्टी ने, उस वफ्द ने एक बहुत बड़ी मशीन वहां पे देखी, कॉल्ड कंबाइन, जो कि कंबाइन कहलाती थी. वर्किंग इन द व्हीट फील्ड, वर्किंग इन द व्हीट फील्ड, वास्ट व्हीट फील्ड. वास्ट कहते हैं वसी, वसी, बड़े पैमाने पर फैली हुई, वसी और अरीज गंदम की जमीनों पर, खेतों पर काम करते हुए देखा. क्या करती थी वो काम? इट कट द क्रॉप, वो फसल को काटती थी. एंड टाइड इट इनटू शीव्स, और उसे गट्ठों में बांध दिया करती थी या कस दिया करती थी. With one sweep, एक ही फेरे में या एक ही चक्कर में, it seemed to eat up a large area. वो एक बड़ा रकबा खाती हुई, कट करती थी, वो खाती हुई नजर आती थी. Of the golden crop, उस सुनहरी फसल का. Which came out tied, जो कि कसा हुआ बाहर आता, बंधा हुआ बाहर आता. into the form of a bundle, बंडल की सूरत में. At the other end, दूसरे सिरे से या दूसरी जानिब से. The wheat then went into a thresher. गंदम फिर एक दूसरी मशीन में जाती जिसका नाम है थ्रेशर. पहली का नाम था कंबाइन, दूसरी का नाम है थ्रेशर. गंदम फिर जाती एक दूसरी मशीन में जिसका नाम है थ्रेशर. which separated the grain, जो अनाज को अलहदा करती, from the chaff, भूसे से, from the chaff, भूसे से. वो कैसे काम करती हुई नजर आती? फ्रॉम वन एंड ऑफ द मशीन, मशीन के एक जानिब से, एक सिरे से या एक तरफ से, fell a golden rain of sweet smelling wheat.
पहला गोल्डन रेन, एक सुनहरी बरसात होती थी ऑफ स्वीट स्मेलिंग वीट, मीठी मीठी खुशबू वाली गंदम की. वाइल, जबकि chaff flew out at the other, जबकि भूसा दूसरी जानिब से उड़ जाएगा. छिलका, भूसा, whatsoever you want to call. chaff flew out at the other, जबकि chaff जो है वो दूसरे सिरे पे से उड़ जाया करता था. The students watched the working of the machine. तलबा ने मशीन के इस काम को देखा with keen interest, बड़ी दिलचस्पी के साथ. Mr. Hassan said, हसान साहब ने, मैनेजर साहब ने कहा, quote, ये उनके अल्फाज हैं, the whole process of plowing, P-L-O-U-G-H-I-N-G, बहुत बच्चे या बहुत लोग हमारे यहाँ इसे प्लफिंग पढ़ते हैं, तो plowing is the right word, आप इसको पढ़िए. The whole process of plowing, seeding, harvesting and threshing the corn, सारा का सारा काम, of plowing, हल चलाई का, seeding, बीज बुआई का, हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई का, एंड थ्रेशिंग, और छटाई का, छटाई, एंड थ्रेशिंग द कॉर्न, और अनाज की छटाई का, इज डन विद मशीन्स, मशीनों की मदद से किया जाता है, ऑन आवर फार्म, हमारे खेत पर. वन मैन वर्किंग विद दिस मशीन, एक आदमी जो इस मशीन के साथ काम कर रहा हो, कैन डू एज मच वर्क, वो इतना ज्यादा काम कर सकता है, एज 100 men वर्किंग विदाउट इट. हसान साहब ने लड़कों को बताया कि कोई एक आदमी जो इस मशीन की मदद से काम कर रहा हो, वो उतना काम कर सकता है जितना कि 100 आदमी बगैर मशीन के. We are living in 21st century. हम जानते हैं कि मशीन्स की इफेक्टिवनेस क्या है, मशीन्स कितनी एफिशिएंट होती हैं, कितनी पावरफुल होती हैं, फास्ट होती हैं, एक्यूरेट होती हैं, प्रोडक्टिव होती हैं. तो मशीन की मदद से काम किया जाता है तो वो अच्छी यूटिलाइजेशन कर देती है. बिलाल, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तलबा में से एक था जिसका नाम था बिलाल. सर, जनाब अली, डू यू गेट बिगर क्रॉप्स इन दिस वे? सर, क्या आपको इस तरह से बड़ी फसलें मिलती हैं? मिस्टर हसन, हसन साहब, ओ मच बिगर, हाँ हाँ, बहुत बड़ी फसलें मिलती हैं. बड़ी मतलब ज्यादा, ज्यादा फसल, ज्यादा पैदावार मिलती है. क्या बता रहे हैं उसके बारे में? कह रहे हैं वाइल एन एवरेज फार्म, जबकि एक औसत खेत, एवरेज मींस ऑर्डिनरी फार्म, एवरेज फार्म जो मशीन्स वगैरह यूटिलाइज नहीं करता, वाइल एन एवरेज फार्म प्रोड्यूसेस 15 to 20 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, 15 से 20 क्विंटल, 15 से 20 क्विंटल व्हीट, गंदम पैदा करता है. फॉर एवरी हेक्टर, हर हेक्टर पर, फॉर एवरी हेक्टर, हर हेक्टर पर, वी प्रोड्यूस, हम पैदावार करते हैं, एज मच एज 60 to 70 क्विंटल्स, हम 60 से 70 क्विंटल्स गंदम पैदा करते हैं एक हेक्टर पर, एक हेक्टर पर. ठीक है, 15 to 20 quintals of wheat for every hectare. We produce as much as 60 to 70 quintals per hectare. Bilal, this is wonderful. ये तो हैरत अंगेज है. But surely machines do not make grains. लेकिन यकीनन मशीनें तो अनाज नहीं बनाती हैं. But surely machines do not make grain. लेकिन यकीनन मशीनें तो अनाज नहीं पैदा करती हैं. Mr. Hassan laughing, हसान साहब हंसते हुए. No, नहीं, certainly not, नहीं, यकीनन नहीं. What in fact happens, दर हकीकत होता क्या है, that first the machines called tractors, पहले मशीनें जो कि ट्रैक्टर्स कहलाती हैं, plow deeper, गहराई तक हल चलाती हैं, plow deeper, गहराई तक हल चलाती हैं, then, और फिर, they prepare the land for sowing much faster. They prepare the land, वो जमीन को तैयार करती हैं for sowing, बुआई के लिए, बीजों के बोने के लिए, much faster, बहुत तेजी के साथ. The sowing machine sows the seed very fast. Sowing machine, बीज बोने वाली एक और मशीन होती है अलग. बीज बोने वाली जो मशीन है वो बहुत तेजी के साथ बीज बोती है, बीज बोती है, and no seed goes waste, और कोई बीज जाया भी नहीं जाता.
اور کوئی بیج ضائع بھی نہیں جاتا. آرڈینری فارمز پہ, ایوریج فارمز پہ جب مشینیں نہیں تھیں تو کسان اپنے ہاتھ سے کیاریوں کے اندر اور جو ٹریکٹرز کی مدد سے, اور ٹریکٹرز بھی نہیں تھے تو بیلوں کی مدد سے ہل چلایا جاتا تھا. تو ہل چلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زمین کو پریپیئر کرنا, زمین میں کیاریاں بنانا. ان کیاریوں کے اندر جب وہ اپنے ہاتھ سے اپنے اندازے سے بیج پھینکا کرتے تھے تو ظاہر ہے سارے کے سارے کیاری میں نہیں بھی گرتے ہوں گے, اور اس طرح سے کچھ بیج جو ہے وہ ضائع بھی ہو جاتے تھے. لیکن حسان صاحب بتا رہے ہیں کہ ٹریکٹرز کے زمین کو تیار کر لینے کے بعد سوئنگ مشین جو ہے وہ بیج کی بوائی کرتی ہے اور بہت تیزی سے کرتی ہے, اور کوئی بیج ضائع بھی نہیں جاتا. نو سیڈ گوز ویسٹ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وی آلسو سلیکٹ دا بیسٹ سیڈ. ہم بہترین بیجوں کا انتخاب بھی کرتے ہیں, ہم بہترین بیجوں کا انتخاب بھی کرتے ہیں. دین اور پھر وی یوز کیمیکل فرٹیلائزرس. ہم کیمیائی کھاد کا استعمال کرتے ہیں ٹو انرچ دا سوائل. مٹی کو, زمین کو زرخیز بنانے کے لیے کیمیکل فرٹیلائزر کا بھی استعمال کرتے ہیں ٹو انرچ دا سوائل. مٹی کو, زمین کو زرخیز بنانے کے لیے. We get a lot of canal water. ہمیں بہت سارا نہری پانی ملتا ہے. But we also irrigate our fields. لیکن پھر بھی ہم اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں. سیراب, irrigate, پانی پہنچانا, سیراب کرتے ہیں with our own tube well. اپنے ٹیوب ویل کی مدد سے. which can supply water. جو پانی فراہم کر سکتے ہیں all the year round. سال ہا سال, سال ہا سال, یعنی پورا سال ہمیں پانی فراہم کر سکتے ہیں. فائنلی, اور آخر میں, we spray insecticides. We spray insecticides on the crops. ہم فصلوں کے اوپر کیڑے مار ادویات, جراثیم کش ادویات کا اسپرے کرتے ہیں to kill germs and harmful insects. جراثیم اور نقصان دہ کیڑوں کو مارنے کے لیے, اور نقصان دہ کیڑوں کو مارنے کے لیے ہم انسیکٹیسائڈس کا بھی اسپرے کرتے ہیں. سو لہذا یا اس لیے our farm produces 3 to 4 times as much wheat. 3 سے 4 گنا زیادہ پیداوار کرتا ہے as پر ہیکٹر, فی ایکڑ پر, as an ordinary farm does. As an ordinary farm does. جتنا کہ کوئی اوسط کھیت کرتا ہے, ایک عام کھیت کرتا ہے, اس سے ہمارے ہاں اناج کی پیداوار یا فصل کی پیداوار 3 سے 4 گنا زیادہ ہوتی ہے. آپ نے سارے اسٹیپس سنے, انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح سے فارمنگ کرتے ہیں, اور فارمنگ کرنے کے لیے کون کون سی مشینوں کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں, ٹیوب ویلز کا استعمال کرتے ہیں, اور اس طرح سے وہ بھرپور فصل حاصل کرتے ہیں. سروش, another student, سروش جو کہ ایک اور طالب علم تھا. Do you grow only wheat? کیا آپ صرف گندم اگاتے ہیں؟ Do you grow only wheat? سر کیا آپ صرف گندم اگاتے ہیں؟ مسٹر حسان صاحب نے no نہیں, we grow wheat. ہم گندم اگاتے ہیں, میز مکئی اگاتے ہیں, کاٹن کپاس بھی اگاتے ہیں, شوگر کین گنا اگاتے ہیں, اینڈ گرام اور چنا اور دالیں اگاتے ہیں. مور اوور, مزید یہ کہ we grow vegetables. ہم سبزیاں اگاتے ہیں, and we also have a large orchard. باغ, پھلوں کے باغ کو کہتے ہیں orchard. We have a large orchard. ہمارے پاس ایک بہت بڑا باغ بھی ہے. Where? جہاں we grow mangoes and oranges. جہاں ہم آم اور موسمیاں اگاتے ہیں, oranges اگاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں سر؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ہم سبزیاں بھی اگاتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس we have a big orchard, جہاں پہ ہمارے پاس آم کے اور موسمیوں کے درخت بھی ہوتے ہیں. The party was then taken to the vegetable farm. پارٹی کو, وفد کو لے کے جایا گیا to the vegetable farm, سبزیوں کے کھیتوں پہ, and the visitors were surprised to see growing there. اور سیاحوں کو وہاں یہ بتا کر حیران کیا گیا that in fact was surprised to see growing there. سارے جتنے بھی وزٹرز تھے, دورہ کرنے والے تھے, بچے, طالب علم, وہ وہاں growing there, وہاں اگتی ہوئی دیکھ کر حیران تھے. such vegetables, ایسی سبزیاں
that were out of season, जो बेमौसम की थी, यानी जिन सब्जियों का मौसम नहीं था वहां पे वो सब्जियां भी उगी हुई थी, वहां पर वो सब्जियां भी उगी हुई थी. मिस्टर हसन एक्सप्लेन्ड, हसन साहब ने वजाहत की, ये बताया, ये समझाया, that by using chemical fertilizers के कीमियाई खाद के इस्तेमाल की मदद से, with plentiful supply of water, plentiful बेशबहा पानी की फराहमी के जरिए, and with the help of machinery और मशीनरी की मदद से, they could grow, वो उगा सके, क्या उगा सके, finer and better vegetables, finer ज्यादा उम्दा और ज्यादा बेहतर, इनफैक्ट बेहतर सब्जियां उगा सके, in all seasons, तमाम मौसमों में, and in larger quantities, and in larger quantities और बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार में. He offered the boys fresh tomatoes and cucumbers. He offered the boys, उन्होंने लड़कों को पेशकश की किस चीज की, fresh tomatoes, ताज़ा ताज़ा टमाटर उन्होंने उनके सामने पेश किए, and cucumbers और खीरे या ककड़ियां उनके सामने पेश की. They were washed in running water, उन्हें बहते हुए पानी में धोया गया, and the boys ate them with great delight. और लड़कों ने खूब खुशी के साथ, खूब मजे के साथ वो टमाटर और वो खीरे खाए, वो टमाटर और वो खीरे खाए जो कि फार्म की अपनी प्रोड्यूस थी. बड़ी मजेदार एक्साइटमेंट होती है if you go to a farmhouse or if you go to a orchard, या if you go to a place where you find the vegetables growing, or if you find some kind of fruit hanging in the branches. These all things are great inspiration. बड़ा मजा आता है, खास तौर पे मैंने जैसे स्टार्ट में भी कहा that the people living in cities are usually not very familiar, are not used to go to the farms, or they do not know much about farming. लेकिन when we are able to get a glimpse of all this, किसी जगह पे हम जाएं जहाँ बहुत सारे अमरूद के दरख्त लगे हुए हों, जहाँ बहुत सारे आम के दरख्त लगे हुए हों, तो एक्साइटमेंट आती है, मजा आता है देख के, अच्छा लगता है. It was afternoon by now, अब तक दोपहर हो गई थी, and Mr. Hassan gave the boys a delicious lunch. हसन साहब ने लड़कों को एक मजेदार खाना प्रोवाइड किया, prepared जो कि तैयार किया गया था, mainly बिलखुसूस from the farm's own produce, खेत की अपनी पैदावार से, खेत की अपनी पैदावार से यानी प्रोड्यूस से. Later और बाद अज़ां या बाद में, the students visited the mango orchard, तलबा ने आमों के बाग का दौरा भी किया, आमों के बाग की सैर भी की, and were delighted to see green fruit hanging with the branches. और वो बड़ा खुश हुए हरा हरा फल देखकर, दरख्तों की शाखों से लटका हुआ देखकर, बहुत सारे आम लगे हुए देखकर वो बहुत खुश हुए. लंगड़ा आम लगता है मेरे ख्याल में, देखिए. The trunks of the trees had been whitewashed. दरख्तों के तने, ट्रंक्स, दरख्तों के तनों को वाइट वॉश किया गया था, यानी उन पर रंग किया गया था. किसकी मदद से किया गया था? With lime, चूने से, with lime, चूने की मदद से. And the ground below, और दरख्तों के नीचे की जमीन was neat and clean, साफ सुथरी थी. They did not see any weeds or wild grasses. उन्होंने वहां कोई जंगली घास फूस या खुदरो पौधे, वीड्स, खुदरो पौधे जो खुद से उगाते हैं, ऐसी कोई वीड्स या कोई वाइल्ड ग्रासेस उन्होंने वहां पे नहीं देखी. मिस्टर हसन टोल्ड देम, हसन साहब ने उनको बताया, दैट इट वाज नेसेसरी, कि ये जरूरी था, टू प्रोटेक्ट देम, कि उनको बचाया जाए, फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीजेस, फ्रॉम पेस्ट्स कीड़े मकोड़ों से, एंड डिजीजेस और बीमारियों से, which destroy the plants, जो कि पौधों को भी तबाह कर देते हैं, as well as the fruit, और इसी तरह से फल को भी तबाह कर देते हैं. इसलिए ये जरूरी था कि दरख्तों की हिफाजत किसकी मदद से की जाए. उन्होंने उसका इंतजाम ये किया हुआ था कि जो दरख्तों के तने थे उनको वाइट वॉश किया गया था, चूने की मदद से, लाइम की मदद से, और इसके अलावा
इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का स्प्रे भी वो करते हैं. प्लस दे कीप द ग्राउंड नीट एंड क्लीन. जो खुद ब खुद घास उगाती है या जो जंगली पौधे खुद से उगाते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं इन नेचर. वो ये हमें बताया जाता है, यही हम पढ़ते हैं कि वो कहते हैं ना बचपन में आपको बार बार अम्मी कहती होंगी कि जी पेट में कीड़े हो जाते हैं. तो जो कीड़े हो जाते हैं तो वो आपसे फूड इंटेक ज्यादा मांग रहे होते हैं. तो इसी तरह से ये जो वीड्स हैं, वाइल्ड ग्रासेस हैं, अगर हम अपने मेजर पौधे के साथ या दरख्त के साथ या पेड़ के साथ इनको भी उगने देंगे तो ये भी अपनी फूड आपके पेड़ से, आपके दरख्त से, आपके पौधे से ऑब्टेन करते हैं. लिहाजा फार्मिंग में ये भी एक बहुत जरूरी चीज है. मिस्टर हसन ऑल्सो टोल्ड द विजिटर्स, हसन साहब ने विजिटर्स को, सयाहों को ये भी बताया था दैट द फार्म हैड बीन डूइंग सो वेल, कि खेत इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाता आ रहा था, खेत इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाता आ रहा था दैट दे हैड डिसाइडेड टू ऐड अ डेयरी टू इट. डायरी नहीं है ये, क्या है लफ्ज? डेयरी. दैट दे हैड डिसाइडेड, कि उन्होंने फैसला किया था उसमें एक डेयरी का इजाफा करने का. क्या होता है डेयरी में? हाँ, गाय भैंसें पाली जाती हैं और उनकी मदद से दूध हासिल किया जाता है और फिर दूध से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं. दैट इज व्हाट यू कॉल अ डेयरी फार्म. दैट इज व्हाट यू कॉल अ डेयरी फार्म. जहाँ पे मुर्गियां पाली जाती हैं वो क्या कहलाता है? यस, दैट इज अ पोल्ट्री फार्म. दैट इज अ पोल्ट्री फार्म. तो हसन साहब ने ये बताया that the farm had been doing so well, कि खेत इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाता आ रहा था, that they had decided, कि उन्होंने फैसला किया था to add a dairy to it, उसमें एक डेयरी का इजाफा करने का. There, वहाँ finest cows and buffaloes would be kept. उन्होंने उनको बताया था कि वहाँ पे रखी जाती हैं. अब चूंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर पैसेज लिखा हुआ है, जिस वक्त लड़के वहाँ गए थे तो वहाँ पे डेयरी का इजाफा नहीं हुआ था. उन्होंने बताया था कि हमारा प्लान है कि हम यहाँ पे डेयरी फार्म भी ओपन करना चाहते हैं, डेयरी फार्म भी लगाना चाहते हैं. और अपने अज़ाइम, अपने प्रोमिसेस उनको बताए थे पार्टी को, कि वहाँ हम बेहतरीन किस्म की गायें और भैंसें रखेंगे. यहाँ पे किस तरह लिखा हुआ है? देयर, वहाँ फाइनेस्ट cows and buffaloes would be kept, रखी जाती, बेहतरीन किस्म की गायें और भैंसें रखी जाती. He surprised the visitors, उन्होंने सयाहों को या दौरा करने वालों को हैरान कर दिया by telling them, ये बताकर, that the farm would use an electric milker, that the farm would use an electric milker, के जमीनों पे या खेतों पे इलेक्ट्रिक मिल्कर का इस्तेमाल किया जाएगा. देखिए, भैंस का दूध दोहने के लिए मैनुअली जो गवाला है जो दूध निकालता है, दूध बेचता है, मिल्किंग करते हैं जानवरों को, तो अब इलेक्ट्रिक मिल्कर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है. तो इस तरह से जो प्रॉपर डेयरी फार्म्स हैं वहाँ पे. He surprised the visitors by telling them that the farm would use an electric milker, कि खेत जो है या फार्म इलेक्ट्रिक मिल्कर का इस्तेमाल करता किस चीज के लिए? टू मिल्क द एनिमल्स, जानवरों का दूध दोहने के लिए, दूध निकालना, दूध दोहना. मॉडर्न मशीनरी वुड मेक क्रीम, जदीद मशीनें क्रीम बनाती एंड बटर और मक्खन बनाती, एंड प्रिजर्व द मिल्क, और दूध को महफूज करती, और दूध को महफूज करती है. अपना पूरा प्लान उन्होंने उस वक्त उनको बताया. He promised to invite Mr. Ahmed and his class, उन्होंने वादा किया अहमद साहब को और उनकी क्लास को मधु करने का, बुलाने का. When the dairy started working, जब डेयरी काम करना शुरू कर देती. उन्होंने कहा था कि जैसी उस वक्त खड़े होके अगर हम बात करें, मैं कहा जैसी ये डेयरी काम करना शुरू कर देगी हम आपको फिर से बुलाएंगे. Understand class 10th? Okay. He promised to invite Mr. Ahmed and his class when the dairy started working. Mr. Ahmed thanked him. Ahmed साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया. The boys were really happy. लड़के बहुत खुश थे with their visit, अपने इस दौरे के साथ, इस सैर के साथ, and cheered loudly when they left the farm. जब वो उस खेत से, उस जमीनों पर से निकले तो वो खूब खुश हुए. cheered loudly, जोर जोर से उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया, हंसे जोर जोर से. While coming back, वापस आते हुए, while coming back,
واپس آتے ہوئے they talked about their visit. انہوں نے اپنے دورے کے بارے میں بات چیت کی, گپ شپ کی. to the farm, زمینوں پر جو انہوں نے, کھیتوں پر جو یہ ایک وزٹ کی, اس کے بارے میں انہوں نے بات چیت کی. بلال said, بلال نے کہا, we need to establish many such farms throughout the country. we need, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسے بہت سارے کھیت اسٹیبلش کریں, قائم کریں تھرو آؤٹ دا کنٹری, پورے ملک میں. مسٹر احمد جو کہ ان کے ٹیچر تھے, مسٹر احمد agreed with him, احمد صاحب اس کے ساتھ رضامند تھے, راضی تھے. and said, اور کہا, I think you are right. میرا خیال ہے تم ٹھیک کہتے ہو. In this way, اس طریقے سے we would be able to meet the needs of ever growing population. اس طریقے سے ہم ہمیشہ سے اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کی, ایور گروئنگ, ہمیشہ سے بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو, نیڈس کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں گے. کہ جس طرح سے آپ کے سامنے کئی اس طرح کے مظاہر آتے رہتے ہیں, اس طرح کی اگزامپلز آتی رہتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں انفلیشن بہت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی چینی مہنگی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی اور اجناس مہنگی ہو جاتی ہیں, کبھی فروٹ مہنگے ہو جاتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یا تو پروڈکشن کم ہے, یا سپلائی ٹھیک نہیں ہے, یا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اور یقیناً ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے. دیکھتے کہ دیکھتے ہمارے ہاں سال بہ سال آبادی میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وی آر ون آف دا ٹاپ موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ. ہم دنیا کے بہت ہی زیادہ آبادی والے ممالک میں سے ایک ہیں. probably yes, we are on the 5th rank now. ہم 5ویں نمبر پہ پہنچ گئے ہیں, beating Indonesia perhaps. Yes, we are on the 5th number in the world as far as population is concerned. تو کبھی ہمارے یہاں کوئی 18 کروڑ کا نعرہ لگا رہا ہوتا ہے, کبھی 20, تو 22 کروڑ کے قریب, 22 crores we are. 22 کروڑ کے لیے ظاہر ہے غذائی اجناس چاہیے, آٹا چاہیے, چینی چاہیے, چاول چاہیے. تو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے ہاں جو فارمرز ہیں, جو لینڈ اونرز ہیں, جو بڑے بڑے ایگریکلچرسٹس ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاں ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, کنٹمپرری جو اس وقت زمانے کے لحاظ سے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کریں, تاکہ وہ اپنے پروڈکشن ریٹ کو بڑھا سکیں. کیا کر سکیں؟ اپنا پروڈکشن ریٹ بڑھا سکیں. تو جتنی زیادہ وہ فصلیں گرو کریں گے, جتنی زیادہ پروڈکشن یا ییلڈز, جتنی زیادہ وہ ییلڈز دیں گے, اتنی زیادہ ہمارے لیے ہماری جو فوڈ انفلیشن ہے, جو کھانے پینے کی چیزوں کی جو مہنگائی ہے, اس میں کمی آ سکتی ہے. So this was very interesting chapter that was about the visit. میں آخر میں ٹرائی کروں گا ٹو پلے دا ویڈیو, کیونکہ لاسٹ بھی جب میں ٹرائی کیا تھا تو وہ سارا کا سارا مجھے آل ٹوگیدر پورا ایک پیج دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ آپ کی زبردست قسم کا ایک چیپٹر تھا. آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو اچھے سے سنا ہوگا. کمپریہنشن کے سوالات اس کے بہت آسان ہیں, بہت اچھے طریقے سے آپ نے کرنے ہیں. یو کین یوز دا بک ایز ویل, پلس آپ کو خود بھی ان کے جوابات دینے آنے چاہیے. Why were Mr. Ahmed's students excited? ٹھیک ہے, کمپریہنشن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ زبانی جواب دینے کی پوزیشن میں ہو after you have read the chapter, after you have listened to the chapter. بتائیے. Mr. Ahmed's students were excited because they were going on a visit to the farm. They had been given the permission to visit the farm, so that's why they were excited. پڑھیے question number 2. What surprised the boys when they reached the model farm? کس چیز نے لڑکوں کو حیران کیا تھا جب وہ ماڈل فارم پہ پہنچے تھے؟ کس چیز نے کیا تھا؟ جی, it was so large. It was so large. اس کا جو بڑا ہونا تھا اور اس کا انٹرسٹنگ ہونا تھا, اس بات نے لڑکوں کو بڑا حیران کیا تھا. Question number 3 پڑھیے. What is the name of the machine working in the field? ویٹ فیلڈ میں کون سی مشین کام کر رہی تھی؟ یس, اٹ واز کمبائن. اور پھر نیکسٹ کوشچن میں کہہ رہے ہیں what does a thresher do? کیا پڑھا آپ نے, تھریشر کیا کرتا ہے؟
ये थ्रेशर मशीन क्या करती है? It separates the grain from the chaff. वो chaff से grain को अलग करती है, separate करती है. Okay. इसी तरह से next question, a good question ताकि आपको इसका जवाब देना आना चाहिए. How are plowing, seeding and harvesting done on the model farm? Plowing, seeding और harvesting किस तरह की जाती है model farm? तो आप बताएंगे कि most of the things are done with the help of the machines on a model farm. For example, plowing is done with the help of the tractors. Harvesting is done with the help of the huge machine that is called combine. While sowing machines sow the seeds very well. Sow the seeds very well. इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आप करेंगे बी एक्सरसाइज में. आपके पास कुछ टेक्सटाइल स्टडी के वर्ड्स हैं, प्लानिंग, मॉडल, ह्यूज, हार्वेस्टिंग, शीव्स, फर्टिलाइजर्स. इन सबको आपने अपनी सेंटेंसेस में यूज करना है, मेक सेंटेंसेस. और सी एक्सरसाइज आप करेंगे विच इज कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. जैसे नंबर 1, the headmaster dashed them a day's dash. हेडमास्टर साहब ने उनको एक दिन की सैर व तफरीह की इजाजत दे दी थी. तो क्या किया था? The headmaster had allowed them a day's outing. और फिर इसकी ट्रांसलेशन भी आपने करनी है. Mr. Hassan received them at the gate and showed them around. इसी तरह से you will get it from the book inshallah ta'ala and you will finish this chapter. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी कुछ ग्रामर से रिलेटेड हैं, हम वो बाद में करेंगे. इस तरह से हमने अपना चैप्टर नंबर 5 डिस्कस किया है कंप्लीटली अच्छे तरीके से. लेट्स सी इफ आई एम एबल टू प्ले द वीडियो ओवर हियर. Okay, see this the combined harvester. We haven't seen the, so we can take the example from the videos that we have. It looks like a local video, and here you see these are the bundles. These are the bundles that are going into the machine.
from one end of the machine, it takes the bundles, and from the other end, the separation of drain and shaft. You can see that. ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा आसानी होगी और फायदा होगा. आई होप दैट यू विल कंप्लीट द वर्क इन टाइम. प्लस आई विल अगेन से डोंट वेस्ट योर टाइम नाउ and watch the videos and do your work. Thank you. Allah.